Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to this lecture. This is the last lecture series of pharmaceutical biotechnology. In this we will learn the biotechnological aspects of product development. The area of biotechnology based pharmaceuticals such as proteins and nucleic acid based therapeutics has developed significantly during the last few decades. The rapid advances in molecular biology, genetics and recombinant DNA technology have continuously contributed to the development due to the greater understanding of the mechanisms behind the cause and progress of diseases, new methods for target identification, advances in production of biopharmaceuticals, and the development of innovative technologies for formulation and delivery of biopharmaceuticals. This development will expand the list of biotechnology-based pharmaceuticals and open for more and better treatment to the benefit of patients. As an example, the recent discovery of a small interfering RNA, siRNA, operating in mammalian cells has initiated a tremendous research activity to uncover new mechanisms of gene silencing and to use this fundamentally new way to treat diseases by addressing molecular targets otherwise difficult to reach with existing medicines. For the pharmaceutical sciences or for the pharmaceutical scientists who formulate biopharmaceuticals as products with ideal therapeutic effect and storage characteristics, these products are highly challenging. Because of the unique physicochemical characteristics related to the biomolecular structure of biotechnology-based drugs, the formulation of biopharmaceuticals is in many ways different from conventional low molecular drug formulations. Biotechnology-based pharmaceuticals already on the market include recombinant blood factors, recombinant hormones, cytokines, vaccines, monoclonal antibody-based products, and therapeutic enzymes. This lecture focuses on the general information or on the formulation, including aspects of production, delivery, stability, and the usage of biotechnology-based pharmaceuticals. Pharmaceutical formulation is, however, an interdisciplinary science, and a successful formulation of a biotechnology-based drug depends on the thorough understanding of, for example, recombinant DNA technology, purification technology, physicochemical and biological characteristics of the biomacromolecule, including pharmacokinetic properties and immunogenicity. बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स का एरिया जैसे कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बेस्ड थेरेप्यूटिक्स हैं लास्ट फ्यू डेकेड्स में सिग्निफिकेंटली डेवलप हुआ है. रैपिड एडवांसेस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जेनेटिक्स में और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रैपिड एडवांसमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है कंटिन्यूसली टू द डेवलपमेंट बिकॉज अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज़म्स की और क्लियर हुई और कॉज और प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ के मैकेनिज़म्स ज़्यादा क्लियर हुए विद दीज अंडरस्टैंडिंग्स. नए मेथड्स टारगेट आइडेंटिफिकेशन के और एडवांसेस बायोफार्मास्यूटिकल्स की प्रोडक्शन में और डेवलपमेंट इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ में डेवलपमेंट ने फॉर्मुलेशन और डिलीवरी को आसान बनाया है बायोफार्मास्यूटिकल्स की. ये डेवलपमेंट एक्सपेंड होती है और लिस्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स बढ़ती हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट्स एंड बेटर ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ द पेशेंट्स. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो रीसेंट डिस्कवरी है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स की जो कि मैमेलियन सेल्स में ऑपरेट करते हैं. इस डिस्कवरी ने ट्रिमेंडस रिसर्च एक्टिविटी को इनिशिएट किया है और बहुत सारे नए मैकेनिज़म्स लाइक जैसे जीन साइलेंसिंग है इसको अनकवर किया है. और इस
फंडामेंटली न्यू वे को यूज़ किया जा सकता है टू ट्रीट डिजीजेस बाय एड्रेसिंग मॉलिक्यूलर टारगेट्स जो कि विदाउट दिस डिफ़िकल्ट थे विद एग्जिस्टिंग मेडिसिन्स। फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट के लिए जो बायोफार्मास्यूटिकल्स को फॉर्मुलेट करते हैं एज प्रोडक्ट्स, आइडियल थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स डिज़ायर्ड होते हैं। और ये प्रोडक्ट्स जो बायोफार्मास्यूटिकल्स हैं ये हाईली चैलेंजिंग होती हैं बिकॉज यूनिक फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ इनकी रिलेट करती हैं टू बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर जो कि बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रग्स की बेसिस है। और बायोफार्मास्यूटिकल्स की फॉर्मुलेशन बहुत सारे तरीक़ों से डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं व्हेन वी कंपेयर देम विद कन्वेंशनल लो मॉलिक्यूलर ड्रग फॉर्मुलेशंस। बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स या फार्मास्यूटिकल्स जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर हैं उनमें रिकॉम्बिनेंट ब्लड फैक्टर्स हैं, रिकॉम्बिनेंट हार्मोन्स हैं, साइटोकिन्स हैं, वैक्सीन्स हैं, मैब्स या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और थेरेप्यूटिक एंजाइम्स हैं। ये लेक्चर फोकस करेगा जनरल इन्फॉर्मेशन को जिसमें हम फॉर्मुलेशन को पढ़ेंगे इंक्लूडिंग प्रोडक्शन कैसे होती है, डिलीवरी और स्टेबिलिटी प्रोटीन्स की किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और उसको कैसे मेंटेन किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन एक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, लेकिन एक सक्सेसफुल फॉर्मुलेशन जो कि बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड ड्रग की फॉर्मुलेशन है वो डिपेंड करती है थॉरो अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। फॉर एग्जांपल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की थॉरो अंडरस्टैंडिंग, प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी की थॉरो अंडरस्टैंडिंग, फिजिको केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की थॉरो अंडरस्टैंडिंग बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स के, इंक्लूडिंग फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज एंड इम्यूनोजेनिसिटी। So let's first discuss the production aspects. Typically, the biotechnology-based pharmaceuticals are proteins. Therapeutic proteins are available from a number of different sources. For example, animal tissues, plants, microorganisms, and cell culture systems. However, most commercially available therapeutic proteins are produced by large-scale fermentation processes using either recombinant microorganisms or mammalian cells as sources. In contrast to extraction from, for example, animal material, one of the advantages of recombinant technology is the possibility of producing pure substances in large quantities. In addition, recombinant DNA technology or recombinant technology makes it possible to produce substances that previously were impossible to produce in sufficient quantities. Another advantage of recombinant technology is the possibility to introduce chemical modifications to alter the physicochemical or pharmacokinetic characteristics of a protein to improve the stability or the therapeutic effect. To clone a DNA molecule, it must be introduced into a host cell where it is allowed to be replicated. This amplification of the original DNA sequence enables the production of proteins by large-scale fermentation. Typically, biotechnology-based pharmaceuticals proteins होती हैं. Therapeutic proteins number of different resources या sources से available हैं. For example, animal tissues से, plant से, microorganism से और cell culture system से proteins को attain किया जा सकता है. जो most commercially available therapeutic proteins हैं वो large scale fermentation processes से prepare की जाती हैं using either recombinant microorganisms या फिर mammalian cells को इस्तेमाल करते हुए. In contrast to extraction from, for example, animal material, one of the advantages of recombinant technology, इसकी ये possibility है कि pure substances large quantities के अंदर produce हो सकते हैं. Recombinant technology ये भी
एडवांटेज देती है कि सब्सटेंसेस जो कि प्रीवियसली इम्पॉसिबल थे प्रोड्यूस करना सफिशिएंट क्वांटिटीज़ के अंदर, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से वो सब्सटेंसेस रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में सिंथेसाइज किए जा सकते हैं या प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। एक और एडवांटेज रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का ये है कि ये केमिकल मॉडिफिकेशंस इंड्यूस करती है या इंट्रोड्यूस करती है जो ऑल्टर करते हैं फिजिको केमिकल या फार्माकोकाइनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन्स को, ताकि स्टेबिलिटी और थेरेप्यूटिक इफेक्ट को इन्हांस किया जा सके। डीएनए को क्लोन करने के लिए उसे सबसे पहले होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, जहाँ पर वो रेप्लिकेट करता है, और ये एम्प्लीफिकेशन ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस की ये इनेबल करती है कि प्रोटीन्स की प्रोडक्शन हो बाय लार्ज स्केल फर्मेंटेशन प्रोसेसेस। The protein obtained by fermentation are either secreted by the host cells into the culture medium or maintained intracellularly. In a subsequent downstreaming processes, extracellular proteins are normally much simpler to purify than intracellular proteins, as there is no requirement to disrupt the cells to harvest the proteins. The protein product is present often in low concentration in a crude, very complex mixture of cell fragments, including subcellular components as well as a vast number of other cellular proteins. Compared to microbial sources, mammalian cell cultures, for example, Chinese hamster ovary cells, are generally more complex production systems, since various supplements such as serum often have to be added to the culture media in addition to the nutritional requirements. Addition of serum increases the risk of contamination of the final bulk protein with blood-borne pathogens. However, a number of therapeutic proteins, mammalian cells are the cell systems of choice, since mammalian cells, unlike microorganisms, are capable of conducting important post-translational reactions such as glycosylation. The challenge of the bulk product of pharmaceutical proteins lies in the development of purification process to isolate the protein of interest and to obtain a highly purified and properly folded protein, which is a prerequisite for making a safe and therapeutic efficient medicine of optimal quality. प्रोडक्शन के बाद जो प्रोसेस आता है वो है प्योरिफिकेशन का। प्रोटीन्स जो फर्मेंटेशन से ऑब्टेन होती हैं वो सिक्रीट होती हैं, सिक्रीट की जाती हैं होस्ट सेल के थ्रू कल्चर मीडियम में, और उन्हें मेंटेन किया जाता है इंट्रासेल्युलरली। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स नॉर्मली सिंपलर है प्योरीफाई करने के लिए जब हम उन्हें इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स के साथ कंपेयर करते हैं, बिकॉज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन के अंदर सेल डिस्ट्रप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट प्रोटीन्स। प्रोटीन प्रोडक्ट जो प्रेजेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट के अंदर वो ऑफन लो कंसनट्रेशंस के अंदर होती है, क्रूड फॉर्म के अंदर, और कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेल फ्रेगमेंट्स लाइक सबसेलुलर कंपोनेंट्स, इसके अलावा सेलुलर प्रोटीन्स उस मिक्सचर का पार्ट होते हैं इंक्लूडिंग प्रोटीन। जब हम माइक्रोबियल सोर्सेज के साथ कंपेयर करते हैं मेमेलियन सेल कल्चर्स को, जैसे कि चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी सेल्स हैं, तो जनरली मेमेलियन सेल कल्चर में प्रोडक्शन सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सप्लीमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं लाइक सीरम, जिनको ऐड किया जाता है टू द कल्चर मीडियम ताकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट किया जा सके इन ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट थेरेप्यूटिक प्रोटीन। सीरम की एडिशन कंटामिनेशन के रिस्क को इंक्रीज़ कर देती है, और फाइनल बल्क प्रोटीन के अंदर ब्लड बॉर्न पैथोजेंस भी इंक्लूड हो सकते हैं। नंबर ऑफ़ थेरेप्यूटिक प्रोटीन्स मेमेलियन सेल्स से ज़्यादा बनती हैं, और मेमेलियन सेल सिस्टम ऑफ चॉइस है, बिकॉज मेमेलियन सेल्स में अनलाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस प्रोटीन्स की कर सकें, जैसे कि ग्लाइकोसाइलेशन है।
जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कर सकते। बल्क प्रोडक्शन में फार्मास्यूटिकल प्रोटीन्स की एक चैलेंज है जो डेवलपमेंट और प्योरिफिकेशन में लाई करता है। यानी प्योरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट करना होता है ताकि हाईली प्योरीफाइड और प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन जो कि प्री रिक्विसाइट है सेफ और थेरेप्यूटिक एफिशिएंट मेडिसिन के लिए जिसकी ऑप्टिमल क्वालिटी होगी उसे अटेन किया जा सके। अगर आप इस चार्ट के अंदर देखें तो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये रिवाइज करते हैं कि सोर्स मटेरियल्स कुड बी माइक्रोबियल और मैमेलियन सेल्स, दे कुड बी एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रोटीन्स और इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स। If they are extracellular proteins, then there is only a single step process, that is removal of cells. Whereas if there are intracellular proteins, then there are three processes, that is recovery of cells, cell breakage and removal of debris. Once these proteins are attained from either extracellular proteins or intracellular parts, they undergo to these steps, that is concentration of extract, which is done by centrifugation or precipitation, then capture, which can be done by affinity or ion exchange chromatography, and then intermediate purification, which can be done by ion exchange chromatography or hydrophobic interaction chromatography, and polishing, which is the last step, that can be carried out by size exclusion chromatography, and conditioning by adding buffer and pH to maintain the pH and concentration adjustment, and then a final biopharmaceutical product is attained. So once the purification is done in the production of biotechnology based pharmaceuticals, the next challenge is the delivery challenge. The therapeutic applications of biotechnology based drug substances poses several problems, such as the low permeability across biological membranes due to the inherent physicochemical instability of the biomacromolecules, as well as their high molecular weight and polar surface characteristics. This implies that biotechnology based pharmaceuticals for system treatment are administered potentially, although efforts are made to improve bioavailability via alternative routes of administration, as for instance the nasal, pulmonary and oral route. A crucial issue is to consider is how to overcome these biological barriers. Whether the drug delivery system is administered to a patient by parenteral or non-parenteral route of delivery, or aimed for local or systemic effects. Briefly, upon the release from the dosage form, or upon the release of macromolecular drug from the delivery system, the drug should withstand hydrolysis and enzymatic activity in the extracellular melee of at the site of absorption. In case of non-parenteral delivery, the unstirred water layer and especially the viscous mucin layer, in particular, both present at the surface of epithelia, constitute a barrier for absorption of biotechnology based pharmaceuticals and must be permeated for the macromolecules to reach the surface of the epithelial membrane. A barrier of mucus layer does not cover endothelia. Irrespective of the delivery route, the cell layer must be permeated to reach the underlying capillaries. Permeation occurs sporadically by different mechanisms, for example, passive, para or transcellular diffusion, or endocytic transport mechanisms such as macropinocytosis. For macromolecular drugs such as proteins, the mechanism is believed to be dependent on the size, as its uptake and transport are expected to occur mainly by endocytosis. During the permeation of the epithelial or endothelial cell layers, the stability of the biomacromolecule is further challenged by the intra and extracellular enzyme activity before the site of action is reached.
थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड सब्सटेंसेस की कुछ प्रॉब्लम्स पोज करती है, जैसे कि लो परमिएबिलिटी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस, जिसका मेन रीज़न इनहेरेंट फिजिको केमिकल इंस्टेबिलिटी होता है बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की। इसके अलावा बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपोनेंट्स होते हैं और पोलर सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स में ये इम्प्लाई करता है कि सिस्टमिक ट्रीटमेंट मोस्टली एडमिनिस्टर हो पेरेंटली, जिनमें एफर्ट्स की जाती हैं बायोअवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए वाया ऑल्टरनेटिव रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि नेज़ल है, पल्मोनरी है और ओरल रूट है। क्रूशल इशू इसके अंदर कंसिडर करने का ये होता है कि बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स या बायोमैक्रोमोलिक्यूल बायोलॉजिकल बैरियर्स को कैसे ओवरकम करेंगे, वेदर जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो एडमिनिस्टर हो पेशेंट के अंदर बाय पेरेंटल या नॉन पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी, या वो एम करे लोकल या फिर सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स के लिए। क्रूशल पैरामीटर इसमें बायोलॉजिकल बैरियर्स को करना होता है। ब्रीफली, मैक्रोमोलिकुलर ड्रग जब डिलीवरी सिस्टम से रिलीज़ होती है तो ड्रग को विदस्टैंड करना होता है हाइड्रोलाइसिस और एंजाइमेटिक एक्टिविटी के अगेंस्ट, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर मिले में अकर हो रही होती है एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इन केस नॉन पेरेंटल डिलीवरी है तो अनस्टर्ड वाटर लेयर और स्पेशली जो विस्कस म्यूसिन लेयर है, ये दोनों प्रेजेंट हैं एट द सरफेस ऑफ एपिथेलिया और एक बैरियर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स। और इसको ओवरकम करने के लिए बायोमोलिक्यूल्स मस्ट बी परमिटेड ताकि वो एपिथेलियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकें और रीच करें टू द कैपिलरीज। म्यूकस लेयर जो एंडोथीलिया को कवर करती है वो बैरियर का काम करती है। रिस्पेक्टिव ऑफ द डिलीवरी रूट, सेल लेयर मस्ट बी परमिएटेड टू रीच द अंडरलाइंग कैपिलरीज। परमिएशन अकर करती है बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स लाइक पैसिव, पैरा और ट्रांससेल्युलर डिफ्यूजन के थ्रू या फिर एंडोसाइटिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स के थ्रू, जिसमें मैक्रोपेनोसाइटोसिस है। मैक्रोमोलिकुलर ड्रग्स जैसे कि प्रोटीन्स हैं, इनका मैकेनिज्म बेस्ड करता है डिलीवरी का डिपेंडेंट ऑन देयर साइज, और इनकी अपटेक और ट्रांसपोर्ट बेस करती है ऑन द एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म्स। परमिएशन के दौरान जो कि एपिथेलियल और एंडोथेलियल सेल लेयर्स के अंदर हो रही है, बायोमैक्रोमोलिक्यूल की स्टेबिलिटी एक और चैलेंज है जो कि ऑल्टर हो सकती है ड्यू टू इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम एक्टिविटी बिफोर द बायोमोलिक्यूल इज रीच्ड एट द साइट ऑफ एक्शन। So next topic is properties of non-parental routes of administration with respect to systemic delivery of biotechnology based pharmaceuticals. Both parental and non-parental local administration of macromolecular drugs are obviously advantages for treatment of diseases such as cystic fibrosis and bone regeneration, and the primary biological barrier to overcome upon administration are thus elimination, that is avoiding washout and enzymatic degradation. However, when aiming at non-parental administration of biotechnology-based pharmaceuticals for systemic delivery, the barrier characteristics of the biological barrier to be permeated should also be taken in account. The formulation strategies ought to ensure that the drug is applied appropriately and released sufficiently from the formulation. Also, the formulation strategy ought to ensure that the drug is solubilized in the microenvironment where absorption should occur, and the drug exists in an absorbable form, avoiding complexation and ionization, and further that the drug is as stable as possible against hydrolysis and enzymatic degradation.
Ensuring appropriate deposition at the site of absorption often requires specific formulation strategies such as proper aerodynamic diameter of particles for inhalation and enterocoating, and also mucoadhesiveness of drug delivery systems for oral and mucosal delivery. Protection against enzymatic degradation by particulate encapsulation or co-administration of competitive enzyme inhibitors will, for most routes of delivery, be advantageous despite the differences in proteolytic activities. Also, for some routes of delivery, it might be necessary to apply chemical enhancers or enhancing techniques to achieve the therapeutic levels in the systemic circulation. However, this approach is often likely to compromise the barrier properties, increasing the risk of unwanted side effects. Structural modifications of the biomacromolecules and use of drug delivery systems are other approaches to optimize stability or membrane permeability. So in this chart, you are seeing different routes of administration for the biopharmaceutical drug delivery systems. Before we go into the detail of this chart, let's revise why we are actually discussing the properties of non-parental routes of administration with respect to systemic delivery of biotechnology based pharmaceuticals. पेरेंटल या नॉन पेरेंटल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्रोमोलिकुलर ड्रग्स की ऑब्वियस एडवांटेज है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई या बोन रीजनरेशन हो गई, और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स की पेरेंटल या नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन प्राइमरी बायोलॉजिकल बैरियर्स को ओवरकम करके ही की जा सकती है, जैसे कि एलिमिनेशन है या फिर अवॉइडिंग वॉशआउट है या एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन को अवॉइड करना है. हाउएवर, जब हम नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन को एम करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स की नॉन पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन को एम करते हैं फॉर सिस्टमिक डिलीवरी, तो बैरियर कैरेक्टरिस्टिक्स बायोलॉजिकल बैरियर के शुड बी टेकन इनटू अकाउंट. फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजीज इस तरह से बनाई जाती हैं कि ड्रग जो अप्लाई की जा रही है वो अप्रोप्रिएटली रिलीज़ हो और सफिशिएंटली रिलीज़ हो फ्रॉम दी फॉर्मुलेशन. फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजी ये भी इंश्योर करती है कि ड्रग सॉल्युबलाइज हो, माइक्रो एनवायरनमेंट में सॉल्युबलाइज कर जाए जहाँ पर एब्जॉर्प्शन अकर होनी है या एब्जॉर्प्शन होनी है, और ड्रग एग्जिस्ट करे इन एन एब्जॉर्बेबल फॉर्म ताकि वो अवॉइड कर सके कॉम्प्लेक्सेशन और आयनाइजेशन को, और फर्दर ये कि ड्रग स्टेबल रहे एज पॉसिबल अगेंस्ट हाइड्रोलिसिस एंड एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन. अप्रोप्रिएट डिपोजिशन ये इंश्योर करती है एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन कि स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजीज अपनाई जाएं ताकि प्रॉपर जैसे कि प्रॉपर एरोडायनेमिक पार्टिकल साइज है इनहेलेशन फार्मास्यूटिकल्स के लिए, या फिर इंटेरिक कोटिंग है, या फिर म्यूकोएडहेसिवनेस है ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में जो कि ओरल या म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हैं. ये फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजीज ये इंश्योर करती हैं कि ड्रग अप्रोप्रिएट डिपोजिशन दे एट दी साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन. एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन के अगेंस्ट प्रोडक्शन ज़रूरी होती है, और इसके लिए फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजी के अंदर पार्टिकुलेट इनकैप्सुलेशन की जाती है या फिर को एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है ड्रग के साथ या बायोमैक्रोमोलिक्यूल के साथ कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर्स की, ताकि मोस्ट रूट्स ऑफ डिलीवरी में एडवांटेजेस इफ़ेक्ट्स अटेन किए जा सकें डिस्पाइट द डिफरेंसेस इन प्रोटियोलाइटिक एक्टिविटीज़. इसके अलावा कुछ रूट्स ऑफ डिलीवरी के अंदर ये भी ज़रूरी होता है कि केमिकल इन्हांसर्स को ऐड किया जाए ताकि इन्हांसिंग टेक्निक्स से अप्रोप्रिएट थेरेप्यूटिक लेवल सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर अटेन किए जा सकें. ऑल्दो ये अप्रोच
लाइकली कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच है बैरियर प्रॉपर्टीज़ में, और रिस्क ऑफ अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं इस अप्रोच से। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस बायोमोलिक्यूल की जाती हैं। इसके अलावा ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स में ऐसी अप्रोचेस यूटिलाइज़ की जाती हैं जो कि स्टेबिलिटी को ऑप्टिमाइज़ करती हैं और मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी को इन्हांस करती हैं। Let's see this table again. So there are 5 routes of administration explained over here: oral, oromucosal, nasal, pulmonary, and cutaneous. So the surface area and accessibility for oral route is greater than 200 meters square, which is fairly accessible, and it provides site-specific location, and it is difficult to administer. Physical barriers include a thick mucus layer, columnar epithelium monolayer, which is around 10 millimeter in diameter and 10 millimeter in thickness, and pH variations. Enzymatic barriers are explained with these signs. Every plus sign adds to an increased enzymatic barrier. So there are 5 plus. There is a lot much increased enzymatic barrier with oral route of administration, as well as the biomolecules or biomacromolecules which are administered orally also undergo hepatic first pass metabolism. The bioavailability of biomacromolecules or biotechnology based pharmaceuticals through oral route of administration is 0 to 1%. The second route of biopharmaceutical drug delivery is mucosal route. It has 0.02 meter square surface area, and it is easily accessible. Approximate 0.02 meter square surface area. The physical barriers include mucus stratified and partly keratinized epithelium, and this is 500 to 600 millimeter in thickness, and it is hydrated. Enzymatic barriers are lesser than the oral route of administration, and the bioavailability from these type of delivery routes is 0 to 5%. The third route of administration is nasal, where an approximate surface area is 0.015 meters square, which is fairly accessible. The physical barriers include mucus ciliated columnar and pseudostratified epithelium with a thickness of 10 micrometer. Enzymatic barriers are similar to the oromucosal route of administration, but the bioavailability is increased to an extent of 2 to 20%, which is very much more as compared to oral and mucosal routes of drug delivery. When these drugs are administered through pulmonary routes of administration, they have an approximate surface area of 80 to 140 meters square, which is not easily accessible, and the physical barriers include many different regions. Like for example, in bronchi and bronchioles, the physical barrier is mucus and ciliated columnar pseudostratified epithelium with thickness of 10 to 60 micrometer, whereas in alveoli, the physical barrier is squamous epithelial monolayer, which is less than 1 micrometer. Enzymatic barriers are lesser than the nasal and oromucosal route, and the bioavailability is increased through pulmonary route of administration, which is up to 80%, starting from 20%. The last route of administration for biotechnology based pharmaceuticals, non-parenteral route of administration, is cutaneous delivery, which provides an approximate surface area of 1.8 meters square, which is easily accessible, and it do have a physical barrier of keratinized stratified epithelium, providing a thickness of 100 to 200 micrometer, but the enzymatic barrier properties are least through this route of administration, whereas the availability is least as well, which is 0. Bioavailability is least as well, which is 0 to 1%. So in this class, we have discussed the production and purification strategies,
and delivery challenges, as well as the properties of non-parental routes of administration with respect to systemic delivery of biotechnology-based pharmaceuticals. Thank you for listening to this lecture. In the next lecture, we will continue our discussion on biotechnology-based pharmaceuticals. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.